बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर नूर बादशाह। आज का लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, जो कि मेन हमारा फोकस होगा दैट विल बी अबाउट न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। जब हम एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, इन दैट केस यूजुअली वी डू व्हाट, उसमें हम एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं. And if I just give definition of eigenvalues and eigenvectors for any square matrix A, we say that a number lambda will be an eigenvalue for this matrix if you could find a non-zero vector x such that when we apply this A on x, इसको हम ट्रांसफर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या करता है, वो सिंपली उस वेक्टर को एक्सटेंड करता है. ऑब्वियसली लैम्डा पे डिपेंड करता है. अगर लैम्डा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो एक्सटेंशन हो गई. अगर लैम्डा लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली फिर वो उसको एक्सटेंशन उसकी नहीं होगी, उसको शॉर्ट करेगा. और अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन भी चेंज कर देगा. ठीक है, तो हम बेसिकली ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है जिसको हम सॉल्व करते हैं. एंड दिस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन माइट बी रिटन इन दिस फॉर्म. अगर इसको हम इधर लेके आते हैं, so we have ax is equal to lambda x could be written as ax minus lambda x is equal to 0. ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अच्छा, जिसमें से इसको आप इस तरह लिख सकते हैं a minus lambda I, because we'll be taking x common, so lambda I into x that is equal to 0. Keeping in mind eigenvector जो होता है x, it must be non-zero. Okay, so we say x should not be 0. Okay, so अब देख इसमें ये हमारे पास क्या बन गया, it becomes homogeneous equation, homogeneous system of equations obviously depend upon the order of the matrix A. Okay, और किसी भी homogeneous system of equation की जो non trivial solution है, जिसको हम non zero solution कहेंगे, x is not equal to 0, and that's only possible when determinant of this coefficient matrix A minus lambda I, if this matrix is singular. For that purpose we would be saying that determinant of this matrix is what? That will give you a characteristic equation, right? And the roots of this equation is what that is obviously known as eigenvalues. अगर आप इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा, इसके जो रूट्स होंगे दे विल बी आइगन वैल्यूज़. और फिर ये आइगन वैल्यू जो होते हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग उसमें पुट कर देते हैं. दोबारा यहाँ पे वी कम बैक टू दिस इक्वेशन, और यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं. फ्रॉम हेयर जो लेमडा की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे, और फिर ये हमारे पास होमोजीनियस इस इधर पुट कर सकते हैं या इधर पुट करते हैं, आपकी मर्जी है. यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन, व्हाटएवर, इट्स अप टू यू. और फिर इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि ऑब्वियसली यू शुड नो फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा कि हमारे पास आइगन स्पेस बनता है और वगैरह वगैरह. ठीक है, अच्छा, अब ये डिपेंड करता है मैट्रिक्स ए के ऑर्डर पे. अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है, इफ़ दैट इज़ 2 क्रॉस 2, ओके, तो उस केस में इसके ऑब्वियसली भी से इसके जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगा इस पॉलिनॉमियल की पी एन की, दैट विल बी ऑफ डिग्री 2. और इसका मतलब है इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे हमारे पास पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप 2 रूट्स इसमें कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द रूट्स. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाए तो यहाँ पे इसकी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी. ओके, एंड इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन आएगा, जो पॉलिनॉमियल होगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, उसकी डिग्री 3 होगी. और फिर आपके पास के 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको 3 बार होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना होगा विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, एंड सो ऑन. इफ़ यू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, it might be n cross n. Okay, so in that case obviously the degree of polynomial it will be n. ठीक है,
तो जब डिग्री इसकी n होगी इट मीन्स के आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, बायनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ठीक है, और इसके जो n रूट्स होंगे वो उसके आइगन वैल्यूज होंगे। अब इक्वेशन ऑफ डिग्री n को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली डिपेंड करता है उसके नेचर पे। अगर डिग्री 3 का है तो फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, उसके लिए आपको एक रूट गेस करना होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉइंट ये होता है कि हमें एक रूट जो होता है वो हमें बाज़ औक़ात किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए वी विल बी इंटरेस्टेड इन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। समटाइम्स वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, okay, we don't care about the other eigenvalues, we only talk about largest eigenvalues. Sometimes we talk about smallest eigenvalues, okay, or sometimes we talk about relative eigenvalues, maybe an eigenvalue real to a number, किसी भी एक स्पेसिफिक नंबर के करीब अगर हमें इसकी आइगन वैल्यू चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली हमें बाकी आइगन वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2x2 है तो ऑब्वियसली आप फाइंड करके चेक करें कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। 3x3 है, फिर भी थोड़ा सा ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सॉल्व कर सकें और वहाँ से आप लार्जेस्ट को भी फाइंड कर लें और स्मॉलेस्ट की भी फाइंड कर लें। एंड देन यू हैव टू सॉल्व ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। अच्छा, अब इसमें जो न्यूमेरिकल मेथड्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, दे विल बी ऑब्वियसली यूज टू फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू or smallest eigenvalue or any relative eigenvalue close to some number, okay, तो वो हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू भी फाइंड होती है और साथ में उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी फाइंड होता है। तो आपको सारे आइगन वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग 3 मेथड्स, ऑब्वियसली वी कॉल दैट पावर मेथड्स। पूरा जो ग्रुप होगा उसमें ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट 3 मेथड्स। व्हाट विल बी, वन विल बी द पावर मेथड which will be used for finding the largest eigenvalue, okay. The other one will be inverse power method which will be used for finding the smallest eigenvalue, and the next one will be shifted power method, shifted inverse power method, which will be used for finding an eigenvalue close to a number, okay. So yeah, let's do that. Obviously I'll be doing that by using calculator as well and by using Matlab as well. So if we have a square matrix A, okay, let's suppose we have a square matrix, obviously we can find eigenvalues of a square matrix. So let's suppose we have a square matrix A, okay, and the eigenvalue of that matrix, let's suppose that is lambda, okay, and we are interested to find a largest eigenvalue and the corresponding eigenvector, okay. So the power method works in the following way, okay. What would you do for a given initial value? It could be any value. ये मैट्रिक्स फॉर्म ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको वेक्टर फॉर्म में, सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसके आपको आइगन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, उस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ जो वैल्यू आपको गिवन है, जो मैट्रिक्स वेक्टर आपको गिवन है। यहाँ से आपके पास अगेन यू नो दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर यू विल बी गेटिंग बैक अ वेक्टर, ठीक है। और फिर क्या करना है, उस वेक्टर में आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है, जिसको हम इन्फिनिटी नॉर्म कहते हैं। तो आपने उस वेक्टर का इन्फिनिटी नॉर्म लेना होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो वेक्टर यहाँ से आया हुआ था उसको डिवाइड करोगे इसके साथ जो यहाँ पे नंबर है, जो वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाती है। तो ये हमारे पास, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं या स्केलिंग कहते हैं। तो आपने इस वेक्टर को स्केल करना है बाय डिवाइडिंग इट विद व्हाट, विद द इन्फिनिटी नॉर्म, ओके। तो ये आपका एक इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस एक इटरेशन में जो म्यू की वैल्यू आ जाती है वो बेसिकली क्या होगी, दैट विल बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आफ्टर वन इटरेशन, and this will be the corresponding eigenvector after one iteration. Now you would repeat this process again and again, okay. You will be simply taking product of in the next iteration, ये जो वैल्यू आएगी इसकी आपने दोबारा से ए के साथ प्रोडक्ट लेना है और फिर आपने उसमें लार्जेस्ट वैल्यू को चूज़ करना है एंड सो ऑन। और आखिर में व्हेन यू स्टॉप दिस प्रोसेस, व्हेन यू स्टॉप दिस आइटरेशन, एट द एंड जो म्यू की वैल्यू आ जाती है, लेट्स सपोज वो k आइटरेशन था, तो म्यू k जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली योर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, वेयर एज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर z k+1 जो कि स्केल हो चुका होगा, इट विल बी द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ओके।
So let me explain that by using example, by taking an example. Let's suppose we have a matrix 10, 2, 7, 1, 1, 1 and minus 1, 1, minus 3, and we want to find the largest eigenvalue of this method, of this matrix, जिसको हम dominant eigenvalue भी कहते हैं obviously, and corresponding eigenvector as well. Okay, so let's suppose we take the initial value. It could be anything, keeping in mind non-zero होना चाहिए because eigenvector can never be zero. तो हमें non-zero vector चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं. 3, 1, 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं. Obviously transpose means कि आपने column form में लेना है, या तो आप लिख लें simply 3, 1, 1 column, because otherwise multiplication भी possible नहीं होती. तो आपने 3, 1, 1 लेना है. अब इससे फर्स्ट iteration में इस मैट्रिक्स के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, which can be obviously multiplied easily. You know how to do that. It's 10 into 3 plus 2 into 1 plus 7 into 1, that is 10, 30 plus 2 plus 7, that is 39. Again this one with this one, so we get 3 plus 1 plus 1, that is 5. This one is minus 3 plus 1 and minus 3, which is minus 5. You see, we get this vector. Now this is what, this is the first, which we called, we may call it z1 or y1 or whatever, जो भी आप कहते हैं इसको, x1 भी कह सकते हैं. तो ये जो आपके पास आ गया, अब ये क्या है, इसका अपने एब्सोल्यूट इन्फिनिटी नॉर्म लेना है. तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू और 39 है. ठीक है, 39 जब आप ले लेते हैं तो आपके पास जो μ1 हो जाता है, जिसको हमने μ1 μk कहा था, तो इस केस में μ1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 39. तो μ1 इज इन दिस केस 39. और फिर हमने इसी वेक्टर को, ये जो वेक्टर आ गया आपके पास, इसी वेक्टर को हम क्या करेंगे, 39 से डिवाइड करेंगे, विच विल गिव यू दिस वेक्टर. दैट्स 1, this is 0.1282 and this is minus 0.1282. next time आप इस वेक्टर को आपने क्या करना है, you have to multiply this vector with this matrix, जिससे हमारे पास ये वाला आ जाता है. see, it's 9.3590 and so on. अब अगेन आपने क्या करना है, ये आपके पास वही y2 आ गया, या z2 आप कह सकते हैं. अब इसका आपने क्या करना है, इन्फिनिटी नॉर्म लेना है, जो कि यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू, जो उसकी एब्सोल्यूट लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है. तो यहाँ पे जो हमारे पास μ2 होगा, इट विल बी दिस नंबर 9.35 and then 90. This will be μ2, that is second approximation towards the eigenvalue. अगेन इसको आपने स्केल करना है, नॉर्मलाइज करना है, तो इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 9.359 के साथ. So we get to see this is 1, this is this quantity and so on. Next time we will multiply this one with this matrix to get this quantity. You see that's the largest value. ये आपके पास μ3 हो जाएगा. अगेन इसको नॉर्मलाइज करेंगे, स्केल करेंगे, तो ये वेक्टर, अब इस वेक्टर को आपने फिर अगेन नेक्स्ट आइटरेशन मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, राइट, और ये मैट्रिक्स आ जाएगा. अब दिस वन इज μ4, next time this one is μ5, this is μ6, and you see that the number has started repeated, so it's correct up to maybe 1 decimal places. अगर आप इसको आगे लेके जाते जाएंगे तो वो आपके पास इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी जितना आप उसमें इटरेशन बढ़ाते जाएंगे. तो जब अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं तो ये जो 9.794 है, that will be your largest approximate largest eigenvalue, and this will be the corresponding, ये जो 6z आता है या z6 आता है, this vector will be the corresponding eigenvector. Okay, so this all process is basically known as what? This is known as inverse power method, right? Now how do we do that if you want to compute all, because this multiplication is obviously easy to है लेकिन थोड़ा सा lengthy होता है. तो इसको find करने के लिए we can use calculator. Obviously you should have a scientific calculator with you. Let me do that for you guys. How do we do it? Let's suppose we have this calculator, and the first step is what? You will be going for the matrix mode, which is not already there. So you say we are having that is 6 number, so you simply go to 6, and then we need to have a matrix of A. Let's call that 1. So matrix A is 1, we can call it 1. Then we are interested in 3 cross 3 matrix, this matrix. So I will simply press 1 now. See, we are having a matrix this. So I just put 10 in here, the first entry, then we have 2, then 7, then we have 1, 1, 1, then we have minus 1, then we have 1, then we have minus 3. So this is the matrix which is already stored in what? In matrix A. Okay, let me clear this one now. I would need another matrix, this one, you see, I need this one as well. So again I will be taking this matrix. So I will go to shift and then I press
4 to get me another matrix. I will be looking for matrix 4. You see this matrix B, because already I'm having matrix A, तो मुझे एक अब matrix B चाहिए होगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 4 को प्रेस करूँगा. Okay, no, it's not like that, sorry. We have to go for data first. Okay, so that's matrix, and then I will be going to data, so I will press 2, and then I will go to 2 again to get matrix. Okay, it is used for display. अब इस केस में मुझे 3x1 मैट्रिक्स चाहिए होगा, बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स में चाहिए, तो आई बी प्रेसिंग 3. ओके, आई विल गिव द वैल्यू 3. यू कैन गिव इट एनी वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं इसमें. तो 3 then 1, okay, and then 1, right? So we have now two matrices, one is A and the other one is B. Now what do? We have to multiply these two matrices for the first step. Okay, let me move this to somewhere here a bit side, yeah, just to see the values. Okay, now we go for shift and then matrix 4. I'll be going for matrix 3. Okay, multiplied by what? Multiplied by matrix B. So I'll be going back to this one, shift and then matrix B, which is 8 4, you see, and then I'll simply press equal. I'll be getting what? You see, I get this matrix 39, 5 and minus 5. This is the first value. You see, you can go for the next value is 5, the next value is minus 5. You see, हमारे पास डायरेक्ट ही आ जाएगा. अच्छा, अब इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 39 है. अब हम क्या करेंगे, इसको 39 से डिवाइड करना है हमने, बिकॉज वी हैव टू मूव फर्दर. अब दोबारा तो मैं नहीं कर सकता इसको, मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली गो टू शिफ्ट एंड देन आई विल गो टू 4 and then I will press this 6. You see it met ans. तो अगर मैं 6 को प्रेस करूँगा तो मेरे पास met ans आ जाएगा, and I'll be dividing that by what? By 39, the largest value, जिसको आपने ऑलरेडी नोट की होगी. जहन में रखने आपने नोट करना है, क्योंकि उसको डाल हम नहीं कर सकते. So 39 मैं ले लूँगा, it's 39. Okay, and then I press equal. So you see I'll be getting what? It's 1.1282, and then I'm going from minus 0.1282. So you see I'm getting this value, this matrix. Okay. अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, सवाल ये है कि मैं जब इस स्टेप पे आऊँगा तो दोबारा मुझे मैट्रिक्स देना होगा. द आंसर इज नो. नेक्स्ट टाइम अब आप क्या करेंगे, यू विल गो बैक टू दिस शिफ्ट, प्रेस 4, सॉरी, शिफ्ट एंड देन यू प्रेस 4 टू गेट मैट्रिक्स ए बैक. अब आपने क्या करना है, 3 को प्रेस करना है. नेक्स्ट टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कीप इन माइंड मैट्रिक्स बी के साथ नहीं करना, बिकॉज बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो इसे शिफ्ट और फिर इसके बाद हम जाएंगे 4. अब इस बार आपने 6 को प्रेस करना है, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स था, ये जो वेक्टर था, इट इज़ बेसिकली सेव्ड इन मैट आंस. इक्वल प्रेस करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग दिस वन. सी इट्स 9.3590 एंड सो ऑन. ऑब्वियसली ये उसको कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज 1. इफ यू गो डाउनवर्ड यू सी 1, and then the next value is what? It is minus 4.4872. Okay, so obviously it's rounded off. You can fix the values as well. You may go to 3 decimal places or 4 decimal places. You can fix that. Okay. Okay. So again we have to divide it by the largest value, which is 9.3590. Okay. So simply go back and then you say shift. I go to 4. Give me mat ans by 6 and divide that by the largest value, which is already, you might have noted that, आपको ये नोट करना चाहिए पहले से. तो it is 9.359. 9.359. You should fix this to 4 decimal places, because otherwise थोड़ा सा इस वैल्यू में डिफरेंस आएगा, बिकॉज वहाँ पे जो कैलकुलेटर ले रहा है वो 9 decimal place तक ले रहा है, और आपकी जो यहाँ पे जो डिवीजन हम कर रहे हैं वो हम 4 dp से कर रहे हैं, तो शायद ये वैल्यू आगे थोड़े से चेंज होते जाएंगे. ओके, सो आई जस्ट प्रेस इक्वल, आई विल बी गेटिंग दिस वन. यू सी दैट, यू सी अब देखें पूरा 1 नहीं आ रहा है, इट्स बिकम इट इज़ 0.99999, बिकॉज हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हमने इससे डिवाइड किया था. तो अगर आप उसको फिक्स कर दें, यू नो दैट, यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे, इसको मोड को प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिक्स आ जाएगा, फिर तो उस फिक्स पे आपके पास वो बताएगा कितना आपको डिसिमल प्लेस तक चाहिए. ओके, एंड सो ऑन द सेम थिंग. अब देखिए इसमें ऑलरेडी ये उसमें से स्टोर हो गया है, so you may go to shift, you may go to 4, and then you will take 3 again, because matrix A is there, and then you will take multiplied by you see shift, then 4, और फिर आप जाएंगे किस पे, 6 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, and then you will simply take equal.
to get the next one. You see 9.8493. Okay, and the next value is 1.0 something. या और ऑब्वियसली डिफरेंस एज आई सेड थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा. तो या लास्ट में जो है वो 737 आ जाता है, तो उसको आप चेक कर. यहाँ पे 736 आ रहा है, उसी राउंड ऑफ करेंगे तो 737 पे चला जाएगा ये. तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं, यू नो दैट. अगेन इसमें लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 9.8493 है, एंड देन अगेन यू डिवाइड दिस मैट्रिक्स विद दिस वन. ऑल द टाइम आपने ए के साथ क्या करना है, मैथ आंसर को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि इसको हम कैसे कर रहे हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर. ओके, तो दिस इज बेसिकली नोन एज पावर मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग largest eigenvalue. Okay, next one is the inverse power method. An inverse power method, what do? We want to find the smallest eigenvalue. Okay, so first we explain how do we do that, because we need to use power method for it again. So in this case, what do we do? Let me do that for you. लेट्स सपोज लैम्डा जो है हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए के लिए क्या है, ये उसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है. दैट्स द लीस्ट स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, और करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो क्या है, वो एक्स है. नाउ इन दैट केस ए एक्स शुड बी सेम एज लैम्डा एक्स. ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए. ओके, अच्छा, अगर हम इसको a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, सो दिस कुड बी रिटन एज 1 over lambda into x equals a inverse into x, which basically means that 1 over lambda is the eigenvalue of what? That is the eigenvalue of, I will be using EV, okay, eigenvalue, EV of A inverse, and that will be the largest eigenvalue, keeping in mind, because if lambda is the smallest one, 1 over lambda will be the largest one. But this is the largest eigenvalue of what? It is the largest eigenvalue of A inverse, not of A, keeping in mind A के लिए smallest होगा, A inverse के लिए क्या होगा, largest होगा. और आइगन वेक्टर दोनों केस में सेम रहता है, चाहे आप इन्वर्स के लिए बात कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट के लिए कर रहे हैं. जो आइगन वेक्टर ए के लिए था वही आइगन वेक्टर ए इन्वर्स के लिए भी होता है. तो वंस यू केम टू नो दैट कि हमारे पास अब क्या है, हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे थे मैट्रिक्स ए के लिए, विच बिकम्स 1 over lambda बिकम्स द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स. तो इसका मतलब ये है कि हमने अब ए इन्वर्स मैट्रिक्स पे पावर मेथड को यूज़ करना है, राइट. तो जो वहाँ पे हम a को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. इनिशियल लेट सपोज हमें 0 दिया हुआ है, x0, तो x0 के साथ आप a को मल्टीप्लाई कर दें, इट विल गिव यू समथिंग y1. ओके, एंड देन आपने क्या करना है, वही तरीका फिर है, μ1 आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ द इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ y1, जो हमने पावर मेथड में किया था. वी डू सेम थिंग, ठीक है. और फिर आपने अगेन x2 x1 को फाइंड करना है, वट एवर यू कॉल इट, यू कैन गिव इट एनी नेम और एनीथिंग. तो x1 दैट विल बी सिंपली अगेन सॉरी दिस y1 डिवाइडेड बाय द μ1. ये जो y1 आपके पास आया था, इसको आपने μ1 से डिवाइड करना है ताकि इसको नॉर्मलाइज कर दें. ओके, और नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर आपने y2 को फाइंड करना है, जिसके लिए आपको a इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अपने x1 के साथ. और अगेन यू रिपीट द प्रोसीजर एंड सो ऑन. एट द एंड यू विल बी गेटिंग म्यू k. सो लेट्स सपोज म्यू k इज द इन द kth आइटरेशन, राइट. आपके पास ये इसके लार्जेस्ट आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, a इन्वर्स की हो जाएगी आफ्टर kth आइटरेशन. But we are interested in smallest eigenvalue of A, so we'll simply take 1 over mu k. So 1 over mu k, that will be basically what? That will be the smallest eigenvalue of lambda. तो बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम है जो पावर मेथड में हम कर रहे हैं. सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने पहले स्टेप में
ए का इन्वर्स लेना है। और फिर जो हमने पिछले केस में कैलकुलेटर में क्या था कि हम इन्वर्स को कर रहे थे, बार बार ए को मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स के साथ हर बार और आंस एक्स के साथ लेम मैट्रिक्स के साथ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो हम ए इन्वर्स के साथ करेंगे। एंड लेट मी टेल यू हाउ डू वी फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ए वाज ऑलरेडी देयर, सो इफ आई गो देयर और फिर मैं ऐसे करूँ कि मैट ए को ले लूँ 3 के साथ और फिर इसका मैं इन्वर्स ले लूँ, यू कैन टेक इट्स पावर नेगेटिव -1 and that will simply give you inverse of the matrix. Okay, you see that's the matrix. तो आपने पहले इसको क्या करना है, इसको आपने नोट करना है, बिकॉज अभी पॉइंट ये होगा कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये वाला, इसका जो इन्वर्स है ये बेसिकली स्टोर कहाँ पे हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है उसे आंस मैट आंस में स्टोर हो जाएगा और फिर आपने ए में कन्वर्ट करना है इसको, बिकॉज हम क्या करेंगे दोबारा से वो सारी चीज़ें करेंगे। तो ये आपको दोबारा मतलब पहले आप ये मैट्रिक्स नोट कर लेंगे यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज समथिंग, द फर्स्ट वैल्यू इज़ 2/11, इट्स अप टू यू, आप 2/11 लिखते हैं, यू सी। फिर अगली जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है, दैट इज़ -13/22, ओके, एंड देन वी हैव 0.2272 एंड सो ऑन। तो वो मैट्रिक्स आप पहले लिख लेंगे और फिर वो मैट्रिक्स दोबारा अपने डाटा में जाके मैट्रिक्स ए को रिप्लेस करना है इसके साथ, ओके और फिर ये प्रोसेस आपने करना है। तो वंस यू अंडरस्टूड द पावर मेथड, मेरे ख्याल में इन्वर्स पावर मेथड में कोई चीज़ नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, पहले ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तरीके मैंने बता दिया, मैट्रिक्स से आप इंटर करेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा इन्वर्स, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे किसी पीस ऑफ पेपर पे और उसके बाद फिर उसको दोबारा इनपुट करेंगे ए के साथ और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही आप 311 के साथ कर सकते हैं। So yeah, that's the method. I hope you understood it. If you have any query again, you can just leave a message in the comment box. I can do that again for you then. Okay, so in case of inverse power method, the example is almost the same example, matrix same. Okay, we are only changing the problem from largest eigenvalue to smallest eigenvalue. If you take the initial value to be 311, the same thing. तो क्या करेंगे आप, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 311 के साथ, तो आप यहाँ पास यहाँ जाएगा। अब इसमें आपने लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है जो कि 0.9091 है, यू डिवाइड दिस बाय टू गेट इस 1, अगेन मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी विद दिस वन, वी गेट दिस क्वांटिटी जो कि यहाँ पे 1 लार्जेस्ट है 1.0136 एंड सो ऑन। तो वी सी जब हम 7th आइटरेशन पे स्टॉप करते हैं वो लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 1.1467। नाउ कीप इन माइंड दिस वैल्यू 1.1467 इज़ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, नॉट ए। तो अब क्या करना है आपने, इसके लिए इसका अपने रेसिप्रोकल लेना है। तो सिंपली टेक रेसिप्रोकल ऑफ 1.1467 जो कि आपके पास क्या कर देगा 0.8721, ये आपके पास उसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए की आ जाएगी। आइगन वेक्टर सेम रहेगा, उसमें कोई ऐसा ना हो कि आप इधर भी रेसिप्रोकल ले लें, मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल या वेक्टर का रेसिप्रोकल नहीं लिया जा सकता। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज इनवर्स पावर मेथड। ओके, द नेक्स्ट वन इज शिफ्टेड पावर मेथड। इन दिस केस पॉइंट ये होता है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, ओके मैट्रिक्स ए है, और आपसे कहेंगे भाई फाइंड इट्स आइगन वैल्यू क्लोज टू अनदर नंबर गैमा। ओके, एक गैमा नंबर दे आपको दिया होगा कि भाई इसका आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की फाइंड करो जो कि करीब हो किसके, गैमा के, 2 के करीब है, -2 के करीब है, 3 के करीब है, वगैरह वगैरह, कोई भी नंबर आपको दे सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज वो जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है और जो वेक्टर है वो x है, यानी लैम्डा इज वेरी क्लोज टू गैमा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ए एक्स शुड बी same as lambda x because lambda is the eigenvalue, so ax must be same as lambda x. Okay, but we have to incorporate gamma in there, so can we write this one in this form? We have ax minus gamma x. I am just subtracting gamma x from both sides, so we'll be having lambda x minus gamma x, which is very straightforward because of एक तरफ पे कुछ करते हैं तो दूसरा पे वही चीज़ करना होगा। ओके, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज ए माइनस gamma times I, where I is the identity matrix, into x is equal to lambda minus gamma into x,
अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जब x को कॉमन निकाला तो हमने गैमा के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाया था, बिकॉज ये जो है ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे नहीं लगाया बिकॉज ये दोनों स्केलर हैं, तो स्केलर में ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ज़रूरत फिर नहीं होती। अच्छा, अब देखिए लैम्डा जो है इट इज़ क्लोज टू गैमा, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा माइनस गैमा विल बी वेरी स्मॉल, राइट। इसका मतलब है कि लैम्डा माइनस गैमा जो है दैट इज़ द smallest eigenvalue that's the smallest eigenvalue of which matrix? Of matrix A minus gamma I। अच्छा, ये आपको पता होगा लीनियर अलजेब्रा से कि A माइनस गैमा आई का बेसिकली मतलब ये है कि जो नंबर गैमा आपको दिया हुआ है उस नंबर को आपने मैट्रिक्स A के डायगोनल से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करो जो मैट्रिक्स है डायगोनल का। अगर आपको मैट्रिक्स लेट सपोज दिया हुआ है 3 5 2, अगर ये मैट्रिक्स A है, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, और अगला आपके पास है 2 5 1 एंड देन वी हैव 1 माइनस 3 लेट सपोज 2 है, और आप फाइंड करना चाहते हैं लेट सपोज A माइनस 3 I, तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप क्या करो, जो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज है उससे 3 को सेपरेट करो, 3 माइनस 3 दैट विल बी 0, बाकी से नहीं करना, बाकी सेम आएंगे 5 2 2 एंड देन 5 माइनस 3 दैट्स आल्सो 2 एंड देन वी हैव 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 3 आएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो लैम्डा माइनस गैमा है, लैम्डा माइनस गैमा बेसिकली क्या हो जाएगा, वो इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी, बिकॉज लैम्डा माइनस गैमा इज ऑब्वियसली वेरी स्मॉल, इज लैम्डा इज क्लोज टू गैमा, तो ये बड़ा स्मॉल होगा, तो इसका स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी। अब इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब वी हैव टू यूज इनवर्स पावर मेथड, बिकॉज 1 ओवर लैम्डा माइनस गैमा, ये फिर क्या होगा, इट विल बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू of largest eigenvalue of A minus gamma I inverse, इसके लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पर होगा, ठीक है। तो बाकी वही फिर अब जब इसके ये मैट्रिक्स आ गया, वी मे कॉल दिस मैट्रिक्स एज B, सपोज B is equal to A minus gamma I inverse, whatever you call it, it's up to you। अब फिर आपने इस मैट्रिक्स की क्या करना है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मैट्रिक्स B पे अब आपने पावर मेथड को यूज करना है, एंड वंस यू आर डन, तो आखिर में क्या करना है, आपने इसका वापस रेसिप्रोकल लेना है। आपके पास लेट सपोज म्यू के आ गया, तो म्यू के बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर ले, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू विच विल बी 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस गैमा। लेकिन ज़हन में रखे ये भूलना आप नहीं है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली लैम्डा को फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा को फाइंड करूँगा तो भाई सिंपल मैनिपुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा, वी कैन हैव व्हाट 1 ओवर म्यू के, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और साथ में जो गैमा है उसको हम ऐड कर देंगे। आइगन वेक्टर रिमेन द सेम, सो जो आइगन वेक्टर यहाँ पे था ए के लिए, वही आइगन वेक्टर आ गया हमारे पास ए माइनस गैमा आई के लिए, और वही आइगन वेक्टर आएगा ए माइनस गैमा आई इनवर्स, जिसको हमने बी कहा हुआ, उसके लिए भी यही चीज़ होगी। सो ऑल टुगेदर हमारे पास क्या हो गया, आपको मैट्रिक्स ए तो गिवन होगा, सबसे पहले आप उससे क्या करें, मैट्रिक्स ए माइनस गैमा आई, जिसका मैं तरीका बता दिया कि आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक्स ए के डायगोनल से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिसके करीब आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करने, और फिर इसका इन्वर्स अगेन यूजिंग कैलकुलेटर, तरीका मैं बता चुका हूँ, इसको आप इन्वर्स फाइंड करेंगे जिसको आप मैट्रिक्स बी कहते हैं, और फिर आपने बी पे पावर मेथड को यूज़ करना है, और आखिर में फिर आपने उसको जितने इटरेशन तक भी आप करते हैं उसका रेसिप्रोकल लेकर उसमें फिर आपने उस गैमा को ऐड करना है, जो भी आपको नंबर, जिस नंबर के करीब आप कर रहे होते हो, ओके। So let me do that now in detail. So see, this method is used to find eigenvalue nearest to a number gamma.
and that means lambda minus gamma will be very small, right? And then we say that 1 over lambda minus gamma will be the largest eigenvalue of this one. Okay, and then you have to apply what? You have to apply power method on the inverse of this matrix. As I said, a minus gamma I, that means you have to subtract that number gamma from every uh, from the diagonal entry, every diagonal entry of the matrix A. Okay, and then the steps are what? As I said, you simply find a minus gamma I first. Okay, and then you simply take inverse of this one and multiply that with it. बाकी वही same steps आपने करने होते हैं. You see, simple take this one. Y is equal to a minus gamma I inverse, जिसको हम b कह देते हैं. तो b को मल्टीप्लाई करते हो इनिशियल वैल्यू के साथ कुछ आ जाता है, फिर इसके बाद उसका एब्सोल्यूट नॉर्म लेते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म लेते हैं, और फिर इसके बाद दोबारा उसको नॉर्मलाइज करते हैं, देन डू सेम थिंग. यू सी एट द एंड फिर हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेकर जो gamma आता है उसको हम ऐड कर देते हैं. आई होप इट्स वेरी सिंपल. मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑलरेडी. कोई इशू किसी को हो तो यू कैन ऑब्वियसली आप मुझसे पूछ सकते हैं. You can comment in the comment box, and then I'll just come back to you. I'll respond to it. The same matrix जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, and we want to find its eigenvalue near to -2. Okay, it's a small -2 gamma आ गया आपके पास. तो क्या कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि आपने इसके डायगोनल एंट्री से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 10 माइनस -2 करना है, which becomes 12. 1 minus -2 करना है, which becomes 3, and -3 minus -2 करना है, which gives you -1. And this is a minus 2 minus -2i, which is a plus 2i. And then you find inverse of this matrix, which can be found by using calculator, as I explained earlier. ये matrix आप enter कर देंगे. वही matrix जो यहाँ पे था, सिर्फ आपने 10 को replace करना है 12 के साथ, 1 को replace करना है 3 के साथ, और -3 को replace करना है -1 के साथ, and then you will get this inverse. Okay, और फिर इसके बाद आप वही मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे जो ऑलरेडी आप पता है पावर मेथड में कैसे होता है. तो यू सी फर्स्ट स्टेप में यह आएगा. अब इसमें देखिए आपने -1.6 लेना है, जहन में रख लें. ओके, और फिर डिवाइड कर दें. अब यह आ गया, अब -1.7812 आ जाएगा, एंड सो ऑन. एट द एंड यू सी हमारे पास ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई है, -1.683 -1.683. तो 3 डिजिट पे तक रिपीट हो गया. और फिर आपने इस ये आपके पास आखिर में आइगन वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ए माइनस गामा आई इन्वर्स की. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आइगन वैल्यू आ जाएगी किसकी, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी इसके. और फिर इसके बाद हम उसको उधर लेके जाएंगे, ऐड करेंगे. तो इसके रेसिप्रोकल के साथ आप सिंपल ये -2 को ऐड करेंगे तो वी गेट दिस वन. तो दैट विल बी द आइगन वैल्यू विच इज क्लोज टू -2. राइट, let me do the same thing in Matlab as well. Okay, how do we do that in Matlab? You should know that as well. Matlab में अगर हम डायरेक्टली फाइंड करना चाहें तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं. उसमें ई का कमांड आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू गिव अ मैट्रिक्स ए, लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, द सेम मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पे था, दैट वाज 3 10 to 7. I hope you know how to read matrix now. A लिख लेंगे, इसके बाद फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, and then we have 10. I just forgot what was it. 10 to 7, 10 space 2 and then 7, then semicolon, मतलब next row पे जाओ. Then we have 1 1 and 1. You can use semicolon or you can use space. Space is better. And then we have, I think, -1, then 1, and then we have -3. If you want to display this matrix, don't put semicolon on it. So we have 10 to 7, 1 1 1, and -1 1 and -3. You see that is the same matrix what we had here. You see 10 to 7, 1 1 1, -1 1 and -3. Now a simple use command eig, and then we go for a. It will give you all the eigenvalues. That's the largest eigenvalue you see, that is smallest eigenvalue, and this is the eigenvalue close to -2. You see, we found a bit earlier. But how would you do that? By using obviously programming. हम कैसे करेंगे अगर पावर मेथड से हम करना चाहते हैं तो let me clear this just to CL what I'm doing CLC, yeah, CLC में प्लीज क्लियर करें. अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक न्यू फंक्शन को जनरेट करना है. तो उसके लिए you should know that I'm just going for new. Okay, sorry, already there it was. What did I do? Let's go for a new, and then we simply go for function file, right?
you can just call this something, whatever you call it, आपकी मर्जी है. हमें आइगन वैल्यूज भी चाहिए होते हैं, हमें आइगन वेक्टर्स भी चाहिए होते हैं. ठीक है. सो आइगन वेक्टर के लिए आई कैन राइट सिंपली आइगन values eig underscore val, whatever you call it, and the next output is we are interested in eigenvectors as well, corresponding eigenvectors. So eig and vec, you can give it any number, and then I call this any name, sorry. Let me call this power and underscore, let me give this methods. Okay, so I'm interested in what, in this method to power methods. Basically I'm creating a code or generating a code for all three methods at the same time. So I'll be giving a matrix to it, mat, whatever you call it, you can give it a as well. I'll be needing some initial value x, what do you call it, I'll be needing number of iterations. Okay, I may need something gamma as well, sometimes you need that gamma, and I'll be needing the next thing, which is what, yeah, method. I'll be interested in method as well, which method I'm using. Okay, forget about these things. We can simply put some comments here. This code is used for power, inverse power, and shifted power methods. Okay. Okay, so we first use here a command that is switch. There is not a switch command, you see this one, and then let me copy this here. It's a switch command. Basically it will be using for different methods. So, and then we go for different cases. So we go for case, okay, and then you use these two. I'll be talking about the first method, which is maybe power. Okay, so in case of power method, what do we do for all iteration for iter equal 1, it could get at any I भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. और हमें जाना है iterations तक, ये iterations तक हम जा रहे हैं. इसी दैट ये जो चीज़ यहाँ पर यूज़ होती जाएगी वो यहाँ पर ऑब्वियसली उधर से वो जो ऑरेंज कलर है वो हटता जाएगा. ओके, नाउ व्हाट डू वी डू. अब आप देखिए हमने पावर मेथड में क्या किया था कि हमने ए के साथ, जो कि इसको मैट कहते हैं, मैट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था किसको, एक्स को, और इसे जो कुछ आया था उसको दोबारा हम एक्स कह देते हैं. लेट्स कॉल दिस एक्स बैक. ओके, something is wrong. What? Okay, so we are using mat steric x. Okay, and missing है. Okay, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गई आपके पास. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, उसमें हम आइगन वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं. तो ये आपने ये नेम आपने देना है. ओके, सो वी कैन सिंपली कॉल eg अंडरस्कोर वैल, एंड देन वी जस्ट लेबल दैट एज, अगर आप सारे आइटरेशंस की जो वैल्यूज हैं उनको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आई जस्ट गिव टू आइटर, एंड दैट इज इक्वल टू what, we just simply find the maximum value. So I just go for max and apps, and then we go for x. Okay, इसको हमने कर दिया absolute of x. Okay, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. ठीक है, I don't want to display this, so yeah, that's the mu values what we call it. अब आपने इसको स्केल करना है, so we can just call it x back, and x divided by what, x divided by this value. हम इसको डिवाइड कर देते हैं. Okay, just to normalize it. Okay, you have normalized that, and then we are, if you are interested in this eigenvector as well, so I can simply control C and give it control V, and I may give this iter. अगर मैं सारे हर एक आइट्रेशन की जो आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग उसको भी अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो आई विल सिंपली टेकिंग दैट एज x. ओके, तो वो डिफाइन हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में आई विल बी गोइंग फॉर एंड. ओके, so I'm done with power method.
Now if I want to do the same thing for inverse power method, so control C, I'll do that again for you just to give you switching it. So I'll be just going for another one and I will say भाई now अब आप करो क्या चीज़ I power के लिए करो, right? That's inverse power, obviously you can do anything. तो बाकी तो सेम रहेगा, हम यहाँ पे सिंपल इसका इन्वर्स लेंगे. ओके, I'll just take inverse of this mat, जो हमारे पास mat matrix था इसका हम इन्वर्स लेंगे. The rest will be same. Okay, and then I'll be going for the next method, which is I just call it shifted power method. So I may call it SI power. That's shifted power method. Okay, in shifted power method, what do? We would first find matrix B here. Okay, and matrix B will be, we may call that matrix B is what? That is a mat minus gamma times I, and that will be size of mat. उसी साइज का आपने लेना होता है जो ऑलरेडी आपके पास है. ओके, सो जब B फाइंड हो जाएगा तो बाकी यहाँ पर सेम रहेगा. सिंपल आपने क्या करना है, इधर आपने करना है मैट B इनवर्स, आपने इसको यूज करना I and V and then we have B with it. Okay, so inverse of B multiply होगा, right? लेकिन obviously you have to find the final eigenvalue as well. जो लास्ट में हमारे पास eigenvalue आएगी in case of power method, वो आपने फिर उधर से करना है जब हम यहाँ पे इसको मेथड के लिए होगा अकॉर्डिंग. यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है. आई पावर में हम क्या करेंगे, ये आप ज़रा ज़हन में रख लें कि जब यहाँ से ये फाइंड कर देगा, ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उस आइगन वैल्यूज़ वाले, उसका हमने इन्वर्स लेना होता है. इस केस में एट द एंड वंस वी फाउंड दिस वन, राइट, सो एंड पे जब यहाँ पे ख़त्म होगा, so I'll be finding simply inverse of every value because हम उसमें ऐड करते जाते हैं, तो फिर फाइनल जहाँ पे भी आएगा वो स्टॉप करेंगे हम. तो हमें इस मैट्रिक्स का या इस वेक्टर का क्या करना है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है आखिर में. So I'll be simply taking EIG underscore val, that is equal to EIG underscore val dot okay and power and then minus 1. Okay, I'll be taking this one because मुझे उसका दोबारा रेसिप्रोकल लेना है. ये तो मुझे लार्जेस्ट वैल्यू आइगन वैल्यू देगा इनवर्स का. The same thing will be done here as well. Okay, at the end I'll be simply defining my eigenvalue that will be what, which is simply I'll be doing same thing what we have done there. So that is EIG underscore val div minus 1 power, right, and then plus gamma. Okay, that will be adding gamma to every number of the matrix, so we're giving at the end everything. Okay, so that's what we have. This is, I think it will be okay. Let's save this one. So I'm just calling it power methods. So we have it says, but I've given different name. So let me change the name for it something. वहाँ पे small था, ये पे capital है, मैं उसको नहीं कर रहा. Let me give you double asset. So I'll just save that. अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये आया होगा because वो कह रहे हैं कि same name रख लो. Doesn't matter, अगर ये different भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. So okay, so let's give this run this code now. Control C,
And what I'm doing here, we have already matrix A. Okay, see if I just display the matrix A. So we have this matrix. Okay, let's go for this thing now. Control V. I'll be changing this mat with A, X with the 3 1 1 3 1 1, and I'll be going for transpose because we are interested in what, and we may go for number of iterations to be 10, whatever, it could be anything. 10. Gamma is -2 if you talk about that thing. Now you can change method in here. See, you have to give different method. If are you interested in power method, it will find the largest eigenvalue, so simply write power in, obviously, in these brackets. So it will give the largest eigenvalues, this is the eigenvectors, whereas these are the eigenvalues. See that at the end, that's the final value after 10 iterations, you see. And I think we have already found that the largest eigenvalue was I think it was something 9 point something. Okay, it is the inverse power method. This one, you see, it was a largest eigenvalue 9.7194. it was up to 6 iterations. We have taken 10 iterations, which is 9.7216. okay, right. If you change the method with I power, so it might give you, if I have not made any mistakes, let's see, you see, so the smallest eigenvalue is what, that is 0.8724. right. I hope it will be same what we had in here. It should be same. The smallest eigenvalue is what, that is you see, it's 0.8721, right. 8724, obviously we are going to more iterations. They stop it here and we have gone to 10 iterations, so it obviously improving the values. It is correct up to 2 decimal places now, maybe 4 decimal places, obviously. Right. If you change the method, if you say I'm interested in shift power method, simple change S and then you run it. So you see the eigenvalue is what, it is minus 1.40 something. Why am making something is wrong. Have you given oh sorry, I think we have given, oh yeah, it's -2 there. So something is wrong here. It's plus gamma. We take inverse of this value and then we simply add gamma to it. So it should be like that. Inverse of B steric X. We are going for mat gamma steric I of size mat size. So we're subtracting this one because I give you what, I4, that is identity matrix, it's okay, and we are multiplying with gamma, so that is okay. Let me check it here. You can stop it, the code here as well if you want to run it again. Let me go for this again. So I'm stopped here. Now I can check this matrix P. What is it? Does it look like the same matrix? 12 2 7 1 3 1 and -1 1 -1 is the same matrix जो हमारे पास ये आ रहा है. Okay, इसका inverse हम लेंगे. So it's -3. Where did we make a mistake? It's -3. Is it? Yeah, -1 3. It's okay. Right, so what will be inverse of B? It's also same, so I'm okay with this. And then I'm taking max of this one equal, and once I've done here, you can just take the next step to check the eigenvalue of it. So the first eigenvalue is what now? Underscore val
it is it's 1.6. Is it 1.6 here? Let me, where do I make a mistake? It's 1.6. Yeah, it's minus 1.6. It is 1. Okay, sorry. Yeah, sorry, we made a mistake here, because we are basically taking what? We are taking maximum of uh, absolute of this one. Okay, so yeah, that's something wrong. It's we are not taking its absolute of this, because we are taking the value. If it is negative, so you obviously have to take the negative value. Yeah, that's the problem. Okay, so in this case we are basically the value will be positive and we are taking negative value, so it should be minus there. And then so how to take the negative value then? In that case yeah, you have to look for the value whether this maximum value is negative or not. So how to do that? This is done there, so we go for this value. Now this will be, we want to check whether this value was negative or positive. Okay, in that case obviously we're doing something differently. We'll be taking maximum value and minimum value, and then we'll be talking about the same thing, right? In that case we go for condition. If we'll be finding, let's suppose min is the minimum value of this one. We take minimum value without that absolute now, and that is okay, and we find the maximum value as well. Let's call this max, and this is the maximum value of same in this. Okay, and then we'll be talking about whether min is smaller than max or not. So we say if ABS of min is less than this ABS of max, हम ये कह रहे हैं कि अगर जो मिनिमम वैल्यू है उसका अगर हम एब्सोल्यूट ले लें, अगर वो क्या हो, वो इसके एब्सोल्यूट से कम है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने किससे फिर डिवाइड करना है, आपने फिर उसको डिवाइड करना है मैक्स के साथ. दिस इज़ द कंडीशन. तो इसको आप डिवाइड करो, मतलब आपने यही वैल्यू फिर लेनी है जो यहाँ पे आ रहे हैं, आप इसी को ले लो. सिंपली टेक मैक्स. इसको ले लें. एल्स फिर आप क्या कर लें, if that is not the case, then we take this value to be the negative one. Okay, let me take this one then. Control C, Control V, and then I'll be saying if that is not the case, so I'll be going for min value then, and then we say end. Okay, so in this case what do we do? As I said, we are basically finding the value in either negative or positive, और फिर आपने इसको इस तरीके से रन करना है. तो if you do this again, I hope it will give us now the correct answer. Let's do that. Yeah, I see that it's now it's okay. It's minus 2.594. That's okay now. Yeah, 594. So you see that I hope ये बात आपको समझ आई होगी. मैंने पहले मिस्टेक की थी, मैंने डायरेक्ट एब्सोल्यूट लिया था, लेकिन एब्सोल्यूट तो हम उसमें नहीं ले रहे. एब्सोल्यूट उस केस में लेंगे जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले रहे हैं, अगर आपको एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू चाहिए होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और समथिंग. लेकिन यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आइगन वैल्यू भी चाहिए. तो वो आइगन वैल्यू -2 के करीब होनी चाहिए. तो इसलिए हमने इसमें ये चीज़ करना है कि अगर ये इसमें स्मॉल है तो ये करो, अदरवाइज़ फिर आपने ये लेना होता है.
I hope ये आपको clear होगा. You can take any matrix now and then you can try this code for it. uh, if you are interested to have this code, I may you can just simply drop a message or drop a comment in the comments part. So I'll just upload this in the description. I hope it's clear to everybody. Thank you very much, and I would see you in next video. Thank you very much and goodbye.